Everyone, we are discussing HC Burma in details by solving all the questions. So we are discussing now friction, and let's continue with the worked out example. Here is the question number 1, and the question, let's read the question. The first thing जो इसमें दिया हुआ है वो कि the coefficient of static friction between the block and incline mu is equal to 0.3. So there may be a block and an incline. So this is incline, and a block, and the block is there on the top of this. Okay, so the coefficient of friction between these two is 0.3, and what is asked is what is the maximum angle थीटा. यहाँ पे ये जो एंगल इस थीटा है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द ब्लॉक. हॉरिजॉन्टल और ब्लॉक के बीच में क्या मैक्सिमम एंगल थीटा हो सकता है. नॉट टू स्लीप, लाइक ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप होना चाहिए ताकि ये जस्ट स्लीप की कंडीशन हो, क्रिटिकल कंडीशन. तो फर्स्ट पार्ट के लिए अपने को ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इन द नेक्स्ट पेज. So this is the block, and the force that is acting will be mg downward, and this a angle है वेज का. So this angle a angle थीटा, तो a angle भी correspondingly थीटा होगा. Okay, so this component of the mg will be mg sin थीटा, एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो एम जी इन इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा. सो फ्रिक्शन विल बी दिस अपवर्ड and this will be s into n. So writing the condition of just slip, mg sin theta greater than mu s into n, which is equal to mu s mg cos theta. Since it is asked not to slip, so we can use this equality other way. Mg sin theta should be less than s into mg cos theta. You can also put equality. So on the critical condition, when this force is just equal, so we can consider that mu s equal to tan theta, theta equal to tan inverse of mu s equal to tan inverse of 0.3. दिस विल ए फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा. अब सेकेंड पार्ट के लिए क्वेश्चन रीड करते हैं. सेकेंड पार्ट ये है कि इफ़ द इंक्लाइन मेक्स एंगल थीटा बाई 2 विथ द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक. पहली बात हमें नोटिस करने की ज़रूरत है कि थीटा अगर क्रिटिकल एंगल है तो थीटा बाई 2 फॉर श्योर स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि लोअर एंगल है. क्योंकि थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी पे क्रिटिकल एंगल थीटा सी स्लिप करेगा, अदरवाइज नहीं स्लिप करेगा. और चूँकि पार्ट 2 में थीटा बाई 2 दिया हुआ है तो ये स्लिप नहीं करेगा. सो फिर से इसको कंपोनेंट कर लेते हैं थीटा बाई 2 पे. लाइक पार्ट 1 में ये अगर थीटा बाई 2 है, सो एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट, दिस विल बी डायरेक्ट, वी कैन राइट डायरेक्टली एम जी साइन थीटा बाई 2 ए पार्ट ए फोर्स, and this normal will be mg cos theta by 2. Friction will be this upward, so mu s into n. So this friction will be just stopping this block from slipping, so that force will equal to mg sin theta by 2. So we can directly write friction mg sin theta by 2, and this will be answer